very briefly make a few recommendations. So as all of us are aware, and as Wasif has already mentioned, about 8.7 million people around the world die from tobacco use every year, and millions others suffer from NCDs which are unreported. In 2017, for example, Pakistan had 5,000 daily admissions directly related to hospital admissions directly related to tobacco use. These are very brief forms of cancer that one can have because of tobacco use. There are 12 mentioned here, all the way from your oral cavity to your lungs and heart, and almost all the major organs are impacted directly by the tobacco cancer. Unfortunately, 8 out of every 10 deaths occur in low and middle income countries, and Pakistan is one of those countries in which this thing is happening. As per WHO's assertion, there is no such thing as a safe cigarette. And by extension, one can always argue that there is no such thing as environmentally friendly tobacco either. So for preparation, as has already been highlighted by Wasif, preparation of one cigarette, the tobacco industry is using 3.7 liters of water, and it emits 14 gallons of CO2, and 3.5 gallons of fossil fuel is used for curing and preparation of these tobacco products. Globally, more than 32 metric tons of tobacco crop and millions of tons of dry tobacco, they constitute basically 84 metric tons of carbon which is being added to our environment, and besides other chemicals. 27 billion metric cube of water is depleted only for preparing cigarettes, and 21 metric ton equivalent of fossil fuel is used for heating and curing different tobacco products. In total, in Pakistan, almost 45 trillion, around the globe, 45 trillion cigarettes are produced every year, and only half of these are going to land up in landfills. Rest of them are going to pollute our oceans, our lakes, water sources, and other green patches on planet. As I already mentioned, starting from growing to curing, processing, and transportation, smoking, all the way, the tobacco has a detrimental and harmful effect on our environment. In Pakistan, as you can see, precisely talking about the marine and the waste management, so more than 27 billion rupees, Pakistani rupees, are spent on these two aspects, whereas we are losing more than 26 billion on in the marine sector, whereas the landfill and waste management, that costs us almost 700 million rupees every year. So in Pakistan, there are 45 billion sticks which are produced every year. This data is little old before the COVID, and they must have gone up by now. 63,672 deaths average per year in Pakistan, and almost a loss of almost 645 billion rupees to the national exchequer on the health only. And I would want to highlight here, the tobacco industry is only paying taxes which are maximum. They went to 130 billion, but now they hover around 90 billion. That is all tobacco industry is paying, whereas they are causing a harm which is equal to 615 billion rupees every year. Very briefly, the SDGs. First, SDG 1 is poverty reduction, and it has been proven through empirical evidence that more low and middle income countries and poor people, they are likely to suffer, they are likely to face the brunt of tobacco use. And tobacco control efforts are extremely important. That has been recommended by the Framework Convention on Tobacco Control, that is FCTC of World Health Organization. And we need to have these organizations or these channels working.
SDG 3, which is the focal brunt of tobacco industry, that is health and well-being. It has been, one of the goals has been set that by 2030, the reduction in the premature mortality or deaths is going to be reduced by, and mental health also is reduced by 1/3. But I do not believe that in presence of tobacco, such an eventuality can materialize. And then there is another goal, which is of substance use. As many of you know, we have a lot of youth sitting in this hall. You are aware that the latest tobacco industry products, that are electronic cigarettes as well as nicotine pouches, they are taking a good toll on our youth, and youth is getting addicted to that. SDG 10, reducing the neutrality among the countries. So what actually is happening is that all these large multinational tobacco industries, they are basically housed, or they belong to the Western developed countries. But whenever there is a product which is banned in those countries, they basically shift that to the low and middle income countries or the poor countries. And again, as I've already mentioned, more than 80% of the deaths, they are occurring in low and middle income countries. Just few quick recommendations. First of all is, and I think this is the most important recommendation, that tobacco industry must be held accountable. Unfortunately, in our case, more emphasis is laid on the taxes which they are paying, and I've already explained that they are paying minuscule of the taxes as compared to the damage that they are causing. So first and foremost thing is that government needs to lay down a long-term multi-sectoral tobacco taxation policy, in which all the relevant stakeholders, they need to participate, and they need to form a tobacco taxation policy. Currently, we do not have any tobacco taxation policy. It depends upon the government as to what do they decide. For example, between 2019 and 2022, we did not have any increment in tobacco taxes. The next thing is sponsorship ban. We already have this thing in place, but through their CSR, that is the community service and such acts, tobacco industry keeps greenwashing their own acts, and they keep promoting their own name. So there needs to be a ban on such activities. We also need to find economically viable alternatives for the farmers, and then we need to foster upon the international cooperation which is existing amongst the tobacco control advocates around the globe. And we need to capitalize on this in Pakistan, and we need to work on creating tobacco laws, which are the best practices which are being followed around the globe. And finally, there is a heavy tobacco industry interference in our policy formulation process. Like I was just discussing before this, that it's been reported in the newspaper also, that probably the Ministry of Health is going to sign into legislation or through an SRO that the heated tobacco products are going to be legalized in Pakistan. So we are really, really worried, because we do not have any means to regulate or control these products if they are legalized. That is about it. I'll be very happy to answer any questions that you might have during the question and answer sessions. Thank you. Thank you very much, Dr. Wasim Iftikhar Janjua. Now I would request Mr. Khurram Hashmi for his kind remarks, please. As you wish. This is a very good opportunity and a very good platform to highlight the challenges related to tobacco control when we talk about the sustainability and sustainable development goals. These are the kind of health-related commitments that the state of Pakistan has actually been working on for quite some time. And in order to achieve those objectives, we have to cater certain areas in a very, very sensitive manner. And tobacco control is one of those areas, as Wasim Saab was pointing out in his presentations. The industry and these products have trickled into almost all areas of life in our surroundings, and its catastrophic consequences are not limited just to the environment, but to the health, to the lifestyle,
And most of all, when we talk about the economy, the productivity of a nation that actually caters through its young generation, and who are the primary targets of the tobacco industry itself to promote its products. They want to have more users, they want to have more smokers, they want to have more tobacco consumers in order to market, sell their products, which actually results in all those calamities that Wasim Saab has just showcased in his presentation. And we are hoping that through this platform, we will be utilizing the experiences of all those experts from all those diverse areas who can actually contribute by understanding the phenomena of how it is impacting not just on these issues, but on a global in a much larger scale. This is something the Sustainable Development Goals intends to, and this is something Pakistan has a commitment towards the public health of its citizens and as a part of its international commitment. Thank you, SDPI, for organizing this panel, and really keenly looking forward for an interactive session with the panelists and, of course, you guys. Thank you very much. Thank you very much, Hashmi sir, for your kind remarks. Now I would request Dr. Amina Khan for his insightful discussion, The 4 questions which you said in the invite. Just to start, before I go into that, I'll just like to introduce myself formally. I'm Dr. Amina Khan. I'm a public health consultant. I'm a CEO of an initiative, which is a research forum. So I'm basically a researcher, and I've been working in tobacco control, cessation, and policy work for the last 10 years. Just a little bit briefly about tobacco has direct and indirect impacts. Direct impacts are, mortality and morbidity, as Wasim Saab has mentioned, which is health, basically how it affects the health. And then there are indirect impact. Indirect effects are because of the cycle, which Wasim Saab has just shown, from the cultivation to production, manufacturing to distribution, then to consumption, and then the waste disposal. All these cycle which the tobacco leaf goes through, and what havoc it causes environmentally, health-wise, it's all in the cycle. So direct and indirect impacts. This is what SDG has taught us, that health in its isolation cannot be considered. So in totality, it has to be considered with other factors, not health only. So tobacco affects us environmentally, socially, in every which way. So we have to consider tobacco in its total form, from where it started, from consumption, and how it is disposed. I'm not going to go into details. I'm not going to go into facts because the facts have been mentioned, but simple facts for people who are here. Growers, the worst thing, one thing which has to be mentioned here, tobacco is known as a monocrop. Monocrop means that it is not, the land it is cultivated on, it is not used for other crops. When the season is out, that land cannot be used for another crop. And this is one of the 10 crops in Pakistan. I'm not an expert. This is what I've learned with from my colleagues and peers. Tobacco is one of those 10 crops which requires the most pesticides, most fertilizers. So it's damaging the land. Pesticides, fertilizers, those kind of, they are used, which the higher income countries don't use anymore. I think they're called POPs. I mean, I'm not an expert in that. So it's costing, I mean, it is said to be a cash crop, but actually it's leading our farmers to poverty because fertilizers, and then you cannot grow anything else on that once the season is out. Then when you come to the manufacturers, the carbon dioxide emission, the greenhouse effect. I mean, I don't remember how much it is emitting, but it's on the environment, it's playing havoc. Then you go on distribution from
the crops to the manufacturers, and then from the manufacturers to the point of sale. I mean, how much of transport, how much of distributors, how much of diesel are you spending? How much of particulate matter you're exposing? How much of diesel fumes I mean, it's air pollution. And it's really, I mean, if you go and read about it, it's very harmful. They're all contributing. That's why all these SDGs from 1 to 16 are all involved in, they are related to indirectly or directly with tobacco. And then coming to consumption, you just heard about smoking. Smoking is a first-hand smoke. Then there's a second-hand smoke, which is 4 times more harmful. You must have heard about it in the houses, in the children and the people who are not smokers, but they're sitting around you. And if you're smoking indoors, it's 4 times more harmful for the person who's smoking. Then nowadays, there's, in the literature shows there's a third-hand smoke. I smoke here and I leave the particulate here, the carpet, and whatever environment pollutants it has, it will react with it and they'll make carcinogens. I mean, it's carcinogen. I mean, like, even if smoking is gone, you do whatever, it keeps on working, and it takes time. It takes time for that third-hand smoke and the particulates to get rid of. You need to really make effort, and what at cost of health. Then obviously, then the litter, the amount of who is paying for it. Is the retail price of tobacco, of cigarette pack, has this environmental effect included in it? Litter, disposable, then the health cost, nothing is included in it. So solutions are there. Whatever they are costing, they are answerable, they are accountable. It needs to be included in the retail price. And then disposable, even once the cigarette buds, deforestation, how much you're burning, sorry, I'm going flight of ideas now. When they go into the landfills absorption to the land and then into the water, still the chemicals are there. So it's a never, this cycle is like, it starts, but it takes you to your grave basically for the users. So as WHO says, 8 million users a year, it's actually, they are looking for 8 million graves in a year. And whoever new users this start, they are digging their graves. And this, we were supposed to talk about solutions. Transnational companies, tobacco industry, are affected by pressure, by lobbies, and by the general public. This is what work we do, awareness things. Then other CSR, the CSR activities, their tree plantation, they are all a hoax basically. What they are doing is it's a cover up, and these are just in the outside. Basically, they need to be involved. They need to be. Whatever we do, work for policy work and for taxation, we are working. So we cannot stop in trying to say that increase the tax, ban these electronic cigarettes. The plastic waste products are coming. These are, how are they going? They're not biodegradable at all. HNDs, heated but not burnt products, nicotine, when nicotine as a third goes into the environment, it reacts with organic pollutants and it becomes carcinogen. So every new product, that's why people advocate it. All these big organizations, they're trying to get it regulated or banned. So all these efforts have to keep, they have to keep on going, because that's how you're going to curtail. We're not going to pick up one SDG and start working. Let's stop people from using tobacco. We have to look at the whole cycle. And obviously I'm a health person, so we do work a lot in health. And thank you for asking me to talk about it, but it's a multi-pronged approach, which SDPI, all union, WHO, us researchers, and tobacco control cell are working, but we need help. We need voices. We need people to be aware of this. And we need parliamentarians to be advocating it for us at every level. So thank you. Wasif, 10 minutes enough? Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Amna, for Wasif, I have to give a disclaimer, please.
Yeah, sure. Organizations like WHO and Union, they opt for ban instead of regulating these products, because banning these products is the top priority. I know they do, but we are researchers, so we cannot just, we have to see which is like regulation or banning. So I will always say regulation or banning. Yes, that Yeah. is perfectly fine. So I'll come pointing again for towards the this bilateral organization- discussion. Thank you very much, Dr. Amna Khan, for bringing, bringing in front the multiple aspects of tobacco hazardous, its hazards and hazardous effects. Now I would request DIG Shahzada Sultan Sab for his kind remarks, please. Thank you very much, Wasif Saab. It's indeed both an honor and a pleasure to be in the company of the experts and the scholars. I'm neither an expert nor a scholar, as you have already heard that I am a law enforcement officer. So the perspective that I would be, ladies and gentlemen, bringing on the table before you all is the perspective of a citizen, not of an expert or a researcher. So I have, you already know the data. Dr. Amna has very ably gone into all the potential harms and the whole cycle, the way it harms lives and the planet and the resources. So I have just two small stories to share with you. When I was growing up as a boy in 1980s in the city of Lahore, I was actually living in the periphery that was a settlement about 300 years old. So we lived in the community where there were small houses and it was a congested area, and the people belonging to the community were the low-income people. In my neighborhood, I wouldn't say the next door, but in the next street, there was an old lady whose husband, there was a young lady basically, at that time she was young, whose husband died very young, and she was left with the care of two young sons. In the local parlance, because I come from Lahore, Punjabi is the dominant language there, their names were Soni and Mitha. Soni means the handsome and Mitha means the sweet. The boys were very handsome, so was the mother. But as they grew up, because they didn't have a father to care for and to look after, they fell into bad ways. And they started with what we are talking about, tobacco, with smoking. And it was the time when heroin was rife in the country. Because in the 80s, most of boys and girls present here probably were not born at that time. But those of us who saw those times, they were really difficult times. The culture of gun and heroin that had just entered Pakistan, and it was really having a very bad impact. So both the boys took to the drugs, heroin. And I saw them dying at a very young age by degrees. The whole family, because they were the only two boys, they died at the age of, say, 21 or 22, leaving their middle-aged mother facing the tragedy of life forever. She also passed away in a matter of few years. So this is the story of one family simply effaced by something which we are talking about today. My second story is about a lady. When she was 18, she started smoking. S. Begum, I'm just using the first letter of her name. S. Begum was not
a college going girl. She did not start it because it was cool. She didn't start it because she wanted to try it. She inherited it from her mother because she used to smoke hookah. So she was born in 1948, and at the age of 18, she started smoking. Then she got married, and at the age of 44, the poor lady had what we call tuberculosis. She had the lung disease. And then at the age of 53, she had a serious lung disease which almost killed her and made her, I wouldn't say the cripple, but she was not able to function fully because she was not able to walk, say, for 2 or 3 minutes. The rest of her life she spent on oxygen and on, she lived with 2 machines, oxygen concentrator, and the other one was um, a machine that would cleanse her lungs of CO2 because the lungs were not functioning properly. She had been left with 39% of her lung reserve, and she died at a young age of 61. Her mother died at the age of 98. She was youngest of the 5 sisters, and her 4 sisters are still alive. She passed away in 2016. So these 2 stories actually give us some sense of the people who are at the end of the day at stake, whose lives, whose families get affected by this thing. Now, why do people smoke? Unfortunately, most people start smoking at a pretty young age. This is what the research tells us. At school, at college, in the company of friends when they're young, because as I mentioned these words earlier, either it is cool or they just wanted to try, and then they are kind of hooked onto it. So as a society, I think Dr. Sabha again very ably has listed the things that we as a society need to do, because you cannot ban, change, or end such a thing by mere enforcement. Enforcement can be just one small part of it, but criminalizing every bad habit or harmful habit, or punishing every bad or harmful habit is not the only solution. It can be part of the solution, but it's not the whole of it. So it all starts with awareness. And the awareness must start at the levels of the school. Our school-going children, there's a large percentage of school-going boys and girls who take to smoking, and we must take care of this. I would propose, because it is possible, 100% ban and enforcement, very strict enforcement of all type of tobacco at the school level, and if possible at early college level, because these are the periods. Youth, again, they are not the victim only, they are also the potential leaders who can actually change the world in which we live. So any government, any society who wants to succeed in ending this kind of thing must rely on youth, must depend on youth, must engage them, must integrate them into all the whole policy framework, in the strategy, and if possible in the operations as well. Because youth represent the power of a nation. They can talk to their parents, they can reason with their parents, they can talk to their elders. And if you make youth aware of the dangers or the harms of tobacco, not only for the lives of the individuals, but the little blue dot on which we are all living, then you have done, I think, the best thing that you can. So any policy framework, any national strategy, any operational steps that we take to curtail or curb the use of tobacco must integrate youth into it. It's very, very important. Dr. Sabha also highlighted the reason I'm mentioning again and again, because she gave a very comprehensive talk, and that was very impressive. NGOs, civil society, again, their major work is awareness, and as
has been said earlier, building pressure, building lobby against the producers, against the polluters. Academia, research is the key. It is the responsibility of academia to take up research, because when you have facts, statistics, scientific research, as we know that in the environmental degradation, the world started responding to the issues raised by the scholars only when or the politicians, when they were backed by solid scientific research. So research is very, very important. What is happening right now in their effort to greenwash their activities, whatever data is coming out regarding the harms caused by tobacco, complete cycle from production to disposal of the waste, the harm which it is causing is being understated. So it is the responsibility of the academia to get into the details, because the devil lies in the detail, and come out with the precise scientific research. That would be a very useful element of lobbying for any future activities. So I would end here. I think I've already overstepped my time. Thank you very much for your kind listening. And I'm really grateful to SDPI for inviting me and making me part of the company of scholars and experts. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, Mr. Shahzada Sultan Sahab, for bringing in the perspective of a citizen, a social perspective, and a perspective of a police officer. But one thing beside other things, one thing which I most liked in your talk is the unreliable data we have for this thing. Now I would request Dr. Syed Kaleem Imam for his valuable input in the discussion. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wasif, thank you very much. My compliments to the panelists over here, and of course, a lot of students over here and distinguished guests. Thank you for being here for this very important session over here. Well, I, like Shahzada, would also start with analogies, this narcotics, this tobacco, all has a, you can say, great attraction towards them, especially in the time of youth, I'm glad that Wasif, while introducing me, didn't say that I was Secretary Narcotics, because most often this is how people used to introduce me, ex-Federal Secretary Narcotics. And I have to keep telling them that I was Narcotics Control Secretary, not Federal Secretary Narcotics. So I'm glad you did that. I would like to say, people, when they discuss, they would also always say, do you smoke? Do you drink? Are you Epicurean? And when you would say, no, we don't do any of this, then they would say, what is the reason of your living in this world? This is how sometimes people will quote it, Na aap cigarette peete hain, na aap drink karte hain, to aap aaye kyun hai duniya mein? The point is that these sort of expressions and attractions, actually, even people who don't smoke and who don't drink, they actually die. But let's not invite death towards you. Let it comes when it's the time, Usko aane dein. यानी कि खुद कोई ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से आपको खुद मुश्किल में पड़ जाए. As a law enforcer, शहजादे को भी पता होगा, one of the big challenges this shisha restaurants which is coming up, and people are so much interested. और जहाँ पता चलता है कि ये शीशे का कोई ऐसा सिलसिला है, you would see the business flourishing over there. So youth is attracted towards these things, and they move towards that. Even when I go abroad these days, which I haven't been for last 3 years, my friends over there would always say, bring cigarettes for us, because it's very expensive out there. And I would say, bring books for me. But somehow, this is how we have been living, and this is how we have been continuing in our society. I have some other analogies to say, some of the best movies in the world, like
you see Tom Cruise acting and you see Daniel Craig as James Bond, they never smoke, and they still look very good. And their films are still very popular. They may be doing something else in the movie, but at least they're not smoking in the movie. That's these cigarette companies, they bring big advertisement with them, and they attract you towards them. I remember there were Will's cigarette at times, and there were a lot of cricketers of Pakistani who used to do an ad for them, and they say, Will's brings you exciting moment in life. So the sketchy slogans attracts you. Then there was also a cigarette, Capstan, would say, Capstan, the world over, and they will take you everywhere, and people feel attracted towards them. There was another cigarette, it's a Princeton, the big one. You get an extra inch, so he said, go for that smoking. But if you see the cigarette packets now, I sometimes wonder how people smoke, because there's a picture of a foot and mutilated. And when you see that, you don't like to actually smoke what is inside that packet, But this is how they have done over the years to actually discourage them. This is smoking, which changes the environment, You would see people not buying houses also at times, that there's a smell of smoke in this house. A lot of vehicles are sometimes not sold. When I was in motorway, I learned this because they say that the last driver was smoking so much and the fragrance or the smell of smoke just won't go away, and people won't buy the cigarettes out from there, So it has been an interesting discussion, and I would quickly like to add a few things to the discussion over here. And Wasif has clearly pointed out the TOR, but I think there's some interesting things I would like to bring, which so far has been discussed, and which I think there will be questions we will be asking in the end, like the growing tobacco actually degrades soil, threatens biodiversity by the use of pesticides and fertilizers. This results in global deforestation of farmland and wood burning. This is what the tobacco curing does. Again, tobacco manufacturing produces different types of environmental harms, including water, energy, using hazardous waste and greenhouse gases. The tobacco leaf and products globally yield significant air pollution. The smoke has an impact on people, which has been mentioned, directly, indirectly, and on the third account also, which has just been mentioned. Around them, an involvement via toxic emissions and greenhouse gases. Disposing tobacco and cigarette waste butts contributes to substantial amount of litter, leach toxic chemicals into environments. So we see the impacts of tobacco lifestyle, and this is how it has been happening. It has been discussed, but just to re-emphasize that the tobacco consumption in adults in Pakistan is around 19.1%, which means out of 100 people, at least 19 people are being affected. In youths between 13 to 15 years, which is concerning, which Shadada also mentioned, is 10.7 use of tobacco products between the boys and girls, boys almost 13% and girls 6.6. And 7.2% smoke tobacco. Among youth, nearly 40% first tried a cigarette before age of 10. And this is happening, despite the law that you cannot sell cigarettes to people under 18. The economic cost of smoking in the context of Pakistan is 615 billion. The economic cost of smoking was about 5 times greater than the revenue in 2019. In Pakistan, tobacco consuming households spends on average 2.7 of their monthly budget on the tobacco. Tobacco industry in Pakistan, international companies hold almost 100% cigarette market share in Pakistan. British American Tobacco 65%, and Philip and Morris International 30%. 52 billion cigarettes were sold in Pakistan in 2017. We have ratified the WHO Framework Convention on Tobacco Control on 3rd November 2004. The treaty is in effect, but how much effective we are, that is another question. On a lighter note again, they say a cigar has a fire at one end
and a fool at the other. And yet we want to smoke, and yet we want to continue. So I would conclude saying that it is an area of great concern. और ख़ास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स इधर आए हुए हैं उनको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, डेंजरस, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. देखने में अच्छा लगता है, मज़ा आता होगा, जिस तरह का कूल है, स्टाइल बनता है, मज़ा आता है, अच्छी तस्वीर शायद आप बना लें, लेकिन अल्टीमेटली आपको, आपके साथ जो लोग बैठे हैं और उस माहौल जो आप छोड़ के जाएंगे, लोगों को उससे नुकसान होता है और नुकसान हो रहा है. और ये बाद में आपको पता चलेगा, शायद उस वक्त ना पता चल सके. कहते हैं सिगरेट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल. लोग जो सिगरेट पी रहे होते हैं वो शायद उनको इतना नशा नहीं लग रहा होता जितना साइकोलॉजिकली वो उसमें इम्पैक्ट हो रहे होते. जो कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, हमें जो एग्जिस्टिंग जो हमारे कानून हैं, वी मस्ट ट्राई टू एनफोर्स देम. उसमें हम कैपेसिटी बिल्ड करें, जितनी हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. कि जो एनवायरनमेंट है और जो डिग्रेडेशन इकोलॉजी में हो रही है उससे फ़र्क पड़ सकता है. एंड इट ऑफ कोर्स इट हैज़ टू स्टार्ट विद नर्चरिंग. I remember a time when old people used to smoke. They won't smoke in front of their children, but now they don't care. Even we see movies is written when someone is smoking, that smoking kills. So they are trying to convey a message, but then still it has somehow become part of our life. So it has to be, the mayas or recommendations as already suggested by Fahar Saab, and it's like awareness, it's like education, it's trying to bring a cultural change, a change in the mindset, and to understand that this is something which is harmful. कितनी मजेदार बात है ना कि एक चीज नुकसान पहुंचा रही है और हम उससे फायदा उठाने, हम फिर भी उसको छोड़ना नहीं चाहते. ये तो खैर इंसानी फितरत है. इंसानी फितरत है कि आप देखें ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, तेज रफ्तारी की वजह से होते हैं. और आप देखें कैंसर और बहुत सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये नारकोटिक्स की वजह से हो रही होती है. इसी तरह बहुत सारी हम और ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमें पता है इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ डिजास्टर्स इफेक्ट, एंड येट वी वांट टू डू. वी आर एट अ स्टेज in our humanity where the environment is the biggest challenge. 25 साल बाद क्या होगा इस दुनिया में, ये आपको अंदाजा हो जाएगा. आज ही मैं खबर पढ़ रहा था लाहौर की कि शायद उन्होंने स्कूल 3 दिन छुट्टी कर दी है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड स्मोक. सो दिस इज द इम्पैक्ट वी, हम शायद रह ना सकें और हमें रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आज भी लोग फार्म हाउसेस की तलाश में, गाँव में रहने के चक्करों में शहर से दूर रहना चाह रहे हैं. स्मॉग जो मोटरवे पे आती है, फॉग जो मोटरवे पे आती है, इट्स वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज द एनवायरनमेंट दैट वी हैव बिल्ड, एंड ऑफ कोर्स टोबैको इज प्लेइंग अ वेरी प्रिंसिपल रोल. थैंक यू वासिफ. Thank you very much, Dr. Sir. I always looked up to you as a good police officer, but I must appreciate the sense of humor you have. So thank you very much for very insightful discussion, sir. Before going to the Minister of State, I would now open the floor for question and answers. Kindly introduce yourself first, and then to whom you're asking that question. The floor is yours. जी, please. माइक दे दें को, माइक अगर कोई है, या यू कैन शाउट. Awais Khan from Qaid-e-Azam University, School of Law. As we are discussing the environmental effects of tobacco, but I from KP, Bardan, my family used to cultivate tobacco, and after taking legacy, I stopped cultivating tobacco. Is not in respect of that it's having destroying the land, but that it's not good, and some of us families and neighbors are still they are cultivating, and it's a cash crop. लेकिन जब हमने स्टॉप किया तो जो मज़ारे जो काम करते लेबरर्स वो अभी भी फोर्स कर रहे कि मतलब कि जो शुगर केन है या कोई वीट है या कोई अदर जो क्रॉप्स है वो कैश नहीं है और हम जो है ना नुकसान हो रहा है. तो उस टाइम पे मुझे अगेन दे आर फोर्सिंग मी टू गो एंड रिवर्स बैक टू स्टार्ट कल्टिवेटिंग टोबैको.
Like on the other hand, from the same district, I knew a senator backed by tobacco mafia, Lakani group, and everyone knows about the Senate elections and criteria, financed by that mafia. And now he is sitting in Parliament and Senate, and they were being sent by that mafia to stop legislation, to stop those legislation which are trying to tax the tobacco companies, and estimated 371 billion tax theft they are involved, tobacco mafia. And the major tobacco owners, everyone know the Lex and tobacco companies, and they are doing, and they are involved in such a high conspiracies they are doing, and sitting in the power corridors. So what should be the future of this debate and this discourse? Thank you. Before and then I wanted to answer the questions, but now, of course, this question is very much related to, of course, to the Parliament, and you mentioned, of course, you have taken the name of the Parliament or Senate, and when you said that what's the use of this discussion or where this future is going to lead, I must appreciate, first of all, I think we all need to appreciate you and your efforts that you have, while knowing that one thing can give you great benefit, but you have stopped and you're not cultivating now, going to that side of the tobacco. I must say we all need to appreciate this young gentleman. And may Allah bless you for this. But at the same time, there, I wanted to mention you very clearly that someone, I'm not saying that I'm praising myself, because I believe that your work speak much more louder than what I or anyone else said. So I wanted to clearly mention that, as you know, that the person who is being backed by mafia or someone, so same time, the same person may be sitting in front of you who is not, even if someone, as Wasim Sab mentioned, that someone is the health minister or someone is bringing the legislation on the tobacco or to making the legalized, I'm opposing it. I'm opposing it from the forum of the SDGs, and I'll try my level best that I'll stand in front of him. So when we talk about these things, then the pressure comes. And from where that pressure can be built? That pressure can be built by the people of you, because me or any senator is no one. We came by the public. We are here for the public because of the people. We are from the people and by the people. So that matters more. That will that tobacco mafia is more stronger, or the voice which can come. So if your voice, like, how many people are sitting here? 50, 60, 70, or maybe 100. So if I'm saying something, and if you can support me at the time, so I think that's more voice. And now this is the time, high time to strengthen, because while I'll share my thoughts with you, or what we are doing from the SDGs forum, then I'm sure you will came across to know. But I think a future is always like, over here he's saying, the last, Abhiji ne zikr kiya, that the people think that how you like can live. Same goes, it's not only the tobacco, it's about other things as well. Like I went to some party, that was a walima or something, and then they said that we have to go for the after party, although it's a very funny maybe for people. But over there, they asked me, do you use hash? I said, yes, I do. And then they went, and then after a little time, there was a plate and there was something gol mengene type, and I don't know, whatever it is. And they said they take, and I said, no, please, what is this? I don't like. They said, you said you use hash. I said, no, I thought that you're talking about the hashtag. And they all laugh so louder. And can you believe they not laugh only, they all like say that, oh, listen, how stupid, how funny, how like she doesn't know about hash. And do you use bong? And Mary Jane Bilao, what is bong? Like I just grown up with my grandparents. I don't have any siblings. I don't have cousins. I was the elder one in the family. And honestly, I didn't knew that. And it was an embarrassing moment that they made me so embarrassed that how funny and how idiot she is. She doesn't know anything. So, you know, this is the society pressure, and who built up? I'm still standing in front of you. So I think this is how the society also matters. How we try to talk, how we try to convince, how we can embarrass those people who are doing this.
that you are the embarrassment for the society, you are the embarrassment for your children, you are the embarrassment for the, of course, for your nation. So I think the future is very much bright. Keep it up. Can I add something here, Vasif? Ji, sure. Thank you, Aves. You've just mentioned कि tobacco mafia जो आप लोगों के farmers के ऊपर है. Every year, अब ये आपने सिर्फ एक level जहाँ land growers के ऊपर है, tobacco mafia कहाँ नहीं है? Tobacco industry every year before the budget 2020 जो यहाँ इस्लामाबाद में या फिर शुरू होता है, game शुरू होती है एक advertising की, lobbying की. Tobacco industry spends millions and billions in convincing, obviously, parliamentarians के जनाब tax ना increase हो. और हम जैसे लोग जो research कर रहे हैं, जो policy पे काम कर रहे हैं, union कर रहे हैं, we have to counter that, including tobacco mafia from the land, including tobacco industry जो advertising कर रही है, जो lobby है, जिस तरह आपने कहा parliament के वो senators के अंदर उन्होंने बनाई हुई है, उनकी presence इतनी strong है. How आपने एक सवाल पूछा था कैसे कर सकते हैं, वो तो वहां रहेंगे जब तक regulations and laws हम लोग और strong नहीं होते जाते, accountabilities, that is how a nation is going to grow. But our side has to keep building up the pressure with people like ma'am, as she's saying she's been opposing it, with people like law enforcement, researchers, tobacco control जो हमारा government का है, and organizations like union and WHO. So we are doing that. Every year हम लोग लगे होते हैं इन्हीं कामों में. So आप अपने level पे resist कर रहे हो, सब लोग हर एक अपने अपने level पे resist कर रहा है. Khurram Hashmi साहब had to say something. Avais, सबसे पहले तो thank you very much. आपकी इस courage को तो we always appreciate. जहाँ सारी चीजें आ रही होती है, आपने जो वो एक बात कही ना कि we abandoned and we switched over to other type of cropping या cultivation. But आपके अपने जो workers हैं, they came back to you कि भाई ये cash crop है, ये सारी चीजें. एक एंड तो ये है जो हाईलाइटेड हुआ है, वन ऑफ द एरियाज विच इज मोस्ट रिस्पेक्टेड, जिसमें आपने इस चीज को रियलाइज किया, रिकग्नाइज किया, स्विच किया. नेचुरली ये वाला जो चैलेंज आपको आया है, इस पर एक सवाल पूछा जा सकता था कि क्या उन लोगों को और जो उनके बिहाफ पे जो एडवोकेट कर रहे हैं, डू दे नो व्हाट इज ग्रीन टोबैको सिंड्रोम, इन अदर वर्ड्स ग्रीन लीफ सिंड्रोम. अगर नहीं है, इस पे भी हमें थोड़ी सी अपनी वो मालूमात बढ़ानी चाहिए. ग्रीन लीफ सिंड्रोम या ग्रीन टोबैको सिंड्रोम एक इंटरनेशनल सिंड्रोम है विच इज ओनली फाउंड इन टोबैको ग्रोइंग फार्मर्स. मोर देन अराउंड 33 मिलियन फार्मर्स जो है ना पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में, वो इस सिंड्रोम का शिकार होते, क्योंकि ये एक स्किन डिजीज है जो आपके कपड़ों से थ्रू मैल, पसीना और टोबैको लीव में जो निकोटीन के केमिकल्स होते हैं, उसकी एमलगमेशन से आपकी स्किन के अंदर जाके ना सिर्फ उसको डीकलर करते, दूसरे स्किन डिजीजेस भी कॉज हो रहे होते हैं. ये बात शायद आप कम से कम मुझसे बेहतर जानते होंगे कि आपके इलाके में जो जो भी ये उगा रहे हैं, और आपकी अगर हिस्ट्री है तो क्या ये वहाँ एविडेंट था, उसकी वजह से क्या किसी फैमिलीज को कोई नुकसान हुआ, क्योंकि बच्चों से लेके बड़े तक सारे इस प्रोसेस के अंदर शामिल होते हैं. क्या सिर्फ यही वजह थी आप लोगों ने जब अपना बिजनेस स्विच किया था इसका काश्तकारी का टोबैको से किसी और प्रोडक्ट पर, या उसके पीछे कोई इस तरह की चीजें भी थी? जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो हमारा प्राइम एरिया इज टू प्रोवाइड safer health barriers, provide a safer health environment, and provide health rights. This also falls into that. Massive respect for you. Thank you very much. I'll just add to. Sure. सबसे पहले I'm very proud of you, Aves. He is my student and he has done something which makes us very proud. You know, you have shifted and you have done moved towards a better business. लेकिन इन सारी ये जो आपने बात की है ना पार्लियामेंटेरियंस के, तो आप रख लें. देखिए पूरी दुनिया में ये हो रहा है. लोग जो भी कारोबार करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, अपने फायदे को देखते हैं, उससे कोई माइंडसेट बना हुआ है, और उसके साथ साथ वो उसके हैबिचुअली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. अब फॉर एग्जांपल आप अक्रॉस द बॉर्डर देखें, 90% ऑफ द ओपियम वहाँ ग्रो होता है, एंड दे वांट टू आल्सो इन्फोर्स शरिया. दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट रिलीजन, बट दे आर आल्सो कल्टिवेटिंग ओपियम, और पूरी दुनिया में वहाँ से तकरीबन जाता है.
इसी तरह आपको हिप्पीज का दौर याद होगा 70s में, कि जब वो जो है पूरी दुनिया में घूमते थे और दुनिया जो है टोबैको या इन नारकोटिक्स या कंट्रोल सब्सटेंस को उस तरह नहीं रिस्पॉन्स करती थी जैसे अब करना शुरू हो गई है, कि अब इश्तिहार ही नहीं आते और बहुत सारी चीज़ें नहीं आती. लेकिन टू बी इन शॉर्ट, इट्स अ बिजनेस, देयर इज अ माफिया, जिस तरह बताया डॉक्टर साहबा ने, इट्स अ माफिया. They have interest. They don't pull ropes. They can pull string. They can pull ropes basically, and they move, and they are part of the big policy which is actually formed. और दुनिया में ज़्यादा खराबी इसीलिए हो रही होती है कि जो लोग जिम्मेदार हैं वही खराबी कर रहे होते हैं. Before taking other questions, I've been told by Minister of State that she has to join Prime Minister office. So I would request Ms. Rumina Khurshid Alam for her kind remarks. Please. Thank you very much. First of all, because I don't want anyone to think that maybe I'm just rushing from the questions, or I would really want to tell you that how much this subject is important to me, that I've been asked to join this on the 11th hour. Am I right? You should mention this to them as well. Yeah, just a couple minutes ago. So I just, because of course, this is something which I'm working very, with, of course, I don't want to say that passionately or something, but yes, this is something which I believe it's very, very important, is the greatest need and niche of the time. So thank you very much for all who are sitting over here. I must congratulate SDPI, Wasif, Mr. Wasim, and all those champions who are sitting over here. You know, of course, I'm sure you all know about the SDGs, and as they've mentioned about the SDGs. So I just wanted to bring in your notice that as first I've given my example, which people thought that that was the stupidity, because then afterwards I came across to know that there are hash brownies as well. So, and then that was being made by some of the children's mothers, and that's been a parties and all that stuff. So I think this is something societal change as well. And then we, as we are all talking about the tobacco, but there is some other elements now as well, that what we came across to know that now, as he has mentioned in the panelists, they have mentioned that the number of girls and boys, how it's getting improved, not improved, getting much more bigger. So for me, the greatest tension, the story which DIG Sab was mentioned about the two women, one who has got widow and been like, her sons got like addicted and they start taking heroin or the drugs, and then another woman who was got that thing attached by her mother, that who was smoking. So, you know, the two women were being somehow, by this way or that way, they've been affected. But same goes what's going on nowadays, it's about the girls. And when we talk about the girls, because this is something, I don't say the cool word, sir. Aap logon ne yahan pe cool ka word kiya. Now this is no more cool. Now the new language is yo. You know, this action with yo. So as I'm not so yo, but I'm sure you maybe knew the people who are very much yo. But unfortunately, the number of the girls is getting increased, and that number is less, like from the age of 10 to 15, 16 and above. And they're not taking the pill, they're not taking the tobacco, they're taking the sort of new form, which in the pills or in the form of a tablets, 1 drop, 2 drop and 3 drop. So from the SDG sector, what we are doing, along with the few, those organizations which have been working on the anti-tobacco, along with the technical experts and data, we came up with the sort of, not only the campaigns, I must say, we are working on the legislation side. And as per Mr. Wasim mentioned that the health ministry is bringing some law. So we as SDG Secretariat from the Parliament, we have already sent them the letter that we want the explanation, that explain us why and how you are going to justify this. So you, like, at the same time, when you talk that these members or the senators are sitting, or maybe they are under some mafia or someone like this, I think that's when it comes I'm so sorry to say, please, I don't want to hurt anyone, or I don't want to but I've asked Wasif that when you know that someone is very strong and who can passionately talk, I'm sorry, nobody contacted me. I went to the people doesn't came to me. So I think when you want to work, we need to work on with the right people.
We have to invest in the right people. When we say that please go and watch what we are going to buy, so same goes that we want to get something done, we need to see which sort of things which we are talking. Like at the honorable panelists, they have mentioned about the Capstan and the Will cigarette and all that. I want to say that as well. I still remember when I was a child, there were two ads which were on the TV, which was that there was a father who was burning a cigarette, who lighted the cigarette, and at the same time, the small child crossing his leg, he was trying to burn the pencil. So the message was very clear and loud that he's burning the pencil. So means education, he's burning his education, his mind. So at the same time, there was one ad where we're talking about the cricketers. That time, Mr. Wasim Akram, there was some health message by the TV that he was running, and another person is running and was said कि आपको सांस नहीं चढ़ा, उसने कहा क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता. शायद आप में से कुछ को याद भी हो. So I think हम क्या देखना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ उन्हीं पॉलिटिशियंस को या पार्लियामेंटेरियंस को जानते हैं जो टॉक शो में लड़ रहे होते हैं? From the day I've joined SDGs, I am not on any political talk show. I don't think so. I can challenge. Nobody have seen me because I'm talking to the media that okay, मुझे लोग कहते हैं आप मीडिया पे क्यों नहीं आ रही, आप टॉक शो क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मैं उन्हें कहती हूँ आप मुझसे SDGs पे बात करें. ये एक बहुत बड़ा, ये भी एक पॉलिटिकल चीज है, इस पे भी बात करें. इस पे पानी है, रोटी है, गुर्बत है, सब कुछ है. But what they don't? Why? Because you don't want to listen. When I say you, it does not mean that you, but yes, majority don't want to listen. So what's our priority of the society? That is also very important. Yes, मुट्ठी भर लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन single बंदा जो है शायद sometimes वो नहीं कर सकता. We need to have the strength. We need to have that if someone is talking, please be the voice. But कुछ करने से पहले हमें जरूर उसको देखना और सुनना जरूर होता है. उसके बाद दूसरी चीज मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि I've engaged the youngsters more. Abhi, if you can get any by chance, if you can visit to the Parliament, SDG Secretariat में हम लोगों ने कुछ ऐसी organizations हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं. Like recently, we are working very closely and very actively with Climatic. They are working on anti-drugs और tobacco. उसके ऊपर हम लोगों ने जो youngsters हैं वो क्या सोचते हैं सिगरेट को लेके, tobacco को लेके क्या सोचते हैं. So उसके ऊपर they have done few things which we have acknowledged, and those things are going to be in the Parliament, ताकि हर मैं शायद आज हूँ कल ना हूँ, लेकिन हर दूसरे आने वाले बंदे को वो नजर आए कि at least they have to do something. If I have done, they also have to done. And another thing in which we really I wanted to share here कि आप सब ने बिल्कुल हम सब ने जोर दिया, पॉलिसी है, लॉ एनफोर्समेंट है, लेकिन व्हाट इज द हम पनिशमेंट कितनी देते हैं. मैं ये समझती हूँ कि फोर्स करना, क्योंकि जब एक बच्चे को भी कहा जाता है कि तुमने इस चीज को हाथ नहीं लगाना, वो जरूर हाथ लगाता है, वो जरूर हाथ लगाता है. लेकिन अगर हम एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दें कि ये हाथ लगाने वाला कितना गंदा होगा. आप अगर एक सिगरेट पी के कोई बंदा आता है तो वापस जब वो दफ्तर के अंदर एंटर होता है उसे स्मेल आती है. बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी आपके एक्शन भी मैटर करते हैं. लाइक मेरा जो ड्राइवर कुछ अर्सा पहले रहा, वो ही यूज्ड टू स्मोक, लेकिन मैंने उसको ये नहीं कहा सिगरेट छोड़ दो. मैंने उससे कहा कि जब वो गाड़ी में वापस आता था, मैंने कहा बेटा कोशिश करो कि थोड़ा कोई खुशबू ऐसी लगा लिया करो कि तुम्हारी बदबू दूर हो जाए, बहुत तकलीफ होती है मुझे. बाय द पैसेज ऑफ टाइम उस जाहिर है वो मजबूर था, वो लेकिन माय बिहेवियर कि जब वो सिगरेट पी के आता था मेरा बिहेवियर क्या था और बाद में क्या था. देन वन डे ही सेड आई एम सॉरी मैडम, अब नहीं करता. मैंने कहा बिल्कुल, और मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि मैंने आई हैव इंक्रीज्ड सैलरी, चाहे वो थोड़ी थी जितनी भी थी, कि इसमें कुछ फल फ्रूट खा लिया करो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा. सो हाउ वी बिहेव विद द पीपल, that is also very important. और उसके बाद I would request over here the panelists, honorable panelists जो यहाँ पे बैठे हैं, including SDPI, that please come to us. अगर मैं आवाज ले रही हूँ तो मैं एक माफिया की आप बात कर रहे हैं, and we all knows mafias are mafias. लेकिन वैसे अभी तक मुझे किसी माफिया ने शुक्र अप्रोच नहीं किया और ना मुझे बात की, क्योंकि उनको भी पता होता है कौन सा दरवाजा खटखटाना है, बट उनको ज्यादा पता होता है. हम अगर कोई बात कर रहा है आप में से, अगर अब मतलब मैं बात कर रही हूँ और मेरे साथ मैं उस चीज पे कोई चैलेंज फेस कर रही हूँ, कितने लोग खड़े होंगे मेरे साथ. लेकिन जो बंदा गलत बात कर रहा, ट्विटर पे एक बंदे ने बात की, हाँ वो डांस हो रहा है, हमने उसको हिट कर दिया. एक बंदा रो पिट रहा है, who cares?
We enjoy it. We enjoyed the bullshit. I'm sorry for this word, but yes, we do. आप में से हम में से कितनों ने आवाज उठाया, कितनों ने YouTube पे कहा कि इसको ब्लॉक करो, कि एक एड जिस एक डब्बी की आती है, मुझे तो बहुत देर बाद जाके पता चला कि वो चीज क्या है, वो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट्स क्या है, लेकिन इतनी फैसिनेटिंग एड है कि एनीबडी कैन गेट अट्रैक्टेड टू इट, कि ओके वो खा के आप सुपरमैन बन जाएंगे, सुपर गर्ल बन जाएंगे, दुनिया की हसीन तरीन आप लोग हो जाएंगे. सो वी नीड टू रेज द वॉइसेस. Like public pressure is the biggest tool. So I think I would request, please, if we are going to do, और आपको पता चले कि कुछ हो रहा है और हम आवाज उठाएं, तो उस आवाज के साथ आवाज जरूर मिला दीजिए. इससे ज्यादा तो I don't know what to say, but I would really appreciate and request the researchers over here and SDPI team as well. जहां तक बात है law enforcement की भी, punishments are sometimes important, but I think the punishment socially we can give to each other, that is the biggest punishment ever. Because when we say कि जब आप किसी माँ बाप अगर आप बच्चों से बात करना बंद कर दें, बजाय कि उनको ग्राउंडेड कर दें और अब माँ या बाप उनसे बात ना करें, तो मेरे ख्याल में वो तकलीफ ज्यादा बड़ी होती है. So we all know this, and I think we are a very responsible society. That's all how we're going to take it and how we can work it. Thank you so very much. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Rumina Khurshid Dalam, for joining us and for the assurance you made to support this noble cause. Once again, thank you very much. We'll carry on the discussion. And any recommendations, anything you can Assalamu alaikum to everyone. So once again, we would resume the question answers session. If anyone want to ask. Ji. Assalamu alaikum to everyone. Hold a minute. Yes, please. You are visible. If you can stand up and introduce yourself so that everyone can see you. Assalamu alaikum to everyone. My name is Hamza Malik, and I'm a business entrepreneur. हमने मैक्रो और माइक्रो एस्पेक्ट्स के बारे टोबैको के बारे में बात की. हमने मैम ने जिस तरह डिस्कस किया कि लाइफ साइकिल क्या है, प्रोड्यूसिंग आती है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होती है, सप्लाई किस तरह होती है, तो हमने मार्केटिंग एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली बात नहीं की. अभी मैं पढ़ रहा था एक रिसर्च पेपर में, बाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी में 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो वीड को सप्लाई करते थे 1 साल से. तो क्या लॉ इन्फोर्समेंट आपकी यूनिवर्सिटीज लेवल में कोई ऐसा किरदार नहीं अदा करी कि हम लोग इसको सजा दें? मैं एज अ बैरियर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, तो वहां पर भी ऐसा एक केस हुआ था. केस ये था कि एक मिनिस्टर का बेटा था, वो वहां पर वीड सेल करता था. तो जिस तरह उसको लॉ इन्फोर्समेंट ने काफी कोशिश की कि यार इसको सजा वगैरह पनिशमेंट दी जाए, तो उनको पता चला और उन्होंने रातों रात उसको जेल से निकाल दिया. तो क्या मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, मुझे ये बताया जाए कि क्या हमारी स्टेट ऐसी लॉ इन्फोर्समेंट सिर्फ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, हम एज अ 63% अराउंड 63% यूथ जो सी है वो इस तरफ लग रही है, लॉ इन्फोर्समेंट किधर है? मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट आया इनकी हेल्प करेगी, हमें यूथ की हेल्प करेगी इस चीज से निकलने के लिए? Your question has been very well taken. I think Dr. Kaleem Imam could answer this question. Answer, thank you very much. आप सही कह रहे हैं कि जो लेटेस्ट ट्रेंड अभी डेवलप हुआ है, खासतौर पे पोस्ट कोविड और उसके से पहले भी, जो मेटाफेटामाइंस हैं, आइस हैं, एस्टेसी हैं, दिस इज बिकमिंग कॉमन टू एन एक्सटेंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. और ये सारी जो
चीज़ें हैं ज़्यादातर बाहर से आती हैं, पाकिस्तान में तो कम ही बनती हैं, लेकिन सम हाउ दे आर स्मगल्ड इन, ये बिल्कुल है। लेकिन एंड इट कैन गेट अलार्मिंग इन टाइम्स। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो एक्शन ले रही है, कुछ पकड़ती है, कभी पकड़ने में कामयाब नहीं होती उसमें, बट ये एक चैलेंज ज़रूर है। और लॉ में उसी वक्त कामयाबी आती है जब सिवेरिटी से ज़्यादा सर्टेनिटी हो उसमें, कि इधर आपने कोई बुरा काम किया, उधर आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। Having said that, we also have to understand कि ये सिर्फ पुलिस की या लॉ इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हम उनको एब्जॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, क्राइम माशरे में पुलिस की वजह से नहीं हो रहा, माशरे में बीमारियां डॉक्टर की वजह से नहीं हो रही, और शहर में आग फायर ब्रिगेड की वजह से नहीं लग रही। हाँ, पुलिस के रिस्पांस की वजह से, ड्यू प्रोसेस की वजह से ऐसे बन सकते हैं सिलसिले जिसकी वजह से वो चीज़ बड़े एग्रवेट हो। हमें बुनियादी तौर पे एड्रेस करना है रूट कॉज को, जिस तरह मैं एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस और टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी हमेशा कहता हूँ, गो फॉर द रूट कॉज। आप देखें बीमारी फैल क्यों रही है, लोग क्यों आइस ले रहे हैं, वीड्स क्यों बिक रही हैं, वो इसलिए बिक रही है कि देयर इज ब्रोकन फैमिली, देयर आर सम सीवियर इश्यूज, पीपल आर बीइंग अब्यूज्ड, they get triggered, they get harassed, and there can be many factors जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। So society as a whole has to come forward and to ensure कि लोग मंशियात की तरफ ना जाएं। और बिल्कुल पुलिस बहुत सी जगह कामयाब होती है, बहुत सी जगह आप कह सकते हैं कि मिली भी हो सकती है, बहुत सी जगह आप समझते हैं कि बुरे लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पुलिस कोशिश करती है और कर रही है जिसे आप कहें। लेकिन क्राइम भी, जिस तरह मैं आपको बताया ना कि अगर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, यू हैव टू सी द फैक्टर्स। अब आप देखें इन्फ्लेशन की क्या परसेंटेज है इस वक्त, 30-35% इन्फ्लेशन चल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, आपने यूथ की बहुत बात की, आप और सिविल डिस्प्यूट्स देख लें, आप जो हैं मुख्तलिफ किस्म के दूसरे इश्यूज देख लें, दोज आर ट्रिगिंग फैक्टर्स जिसकी वजह से क्राइम होता है। तो सोसाइटी को बहुत से नॉन काइनेटिक फैक्टर्स ढूंढने हैं, एजुकेशन बढ़ानी है, हेल्थ प्रोग्राम्स लाने हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाने हैं। आपने जब तक रूट कॉज को एड्रेस नहीं करना है, आप आग ही बुझा रहे होंगे। पूरी दुनिया में आप देखें, बिल्डिंग्स हैं, पहले वो आग बुझाने के आले लगाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग ऑपरेट करते हैं, स्प्रिंकलर्स लगाते हैं, और फिर आग बुझती है तो फायर ब्रिगेड आता है। तो क्या हम डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, हम ऐसे मैयर्स ले रहे हैं कि वो कम से कम फैक्टर्स जिसकी वजह से क्राइम होता है, या जिसकी वजह से लोग नारकोटिक्स में जाते हैं, या जिसकी वजह से सारे सिलसिले हो रहे हैं, उसमें कोई काम हो रहा है? आप सिर्फ रिस्पॉन्स कर रहे हैं या आप रूट कॉज को भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? थैंक यू। शहजादा, वुड लाइक टू ऐड। I'll add. This was a question about hardcore drugs we are talking about, but मेरा experience नहीं है, and obviously they are illegal, we all know. Lekin I will try to take it back to tobacco, where we are concerned with and we are talking about today. Tobacco पे आप हैरान होंगे कि टैप्स कहलाती है एक चीज, tobacco advertising promotion sponsorship पे ban है, but still imagine how many are using. Tobacco वही वाली बात है ना, हमारा behavior है, it becomes a habit, then it becomes an addiction, and then addiction, आपको फिर alcohol भी चाहिए, वो भी addiction, then you need hardcore drugs. So it's like a behavior thing. हमें अपना behavior, lifestyle changing, behavior change, plus with what the government is doing. So एक चीज जिसकी एडवर्टाइजिंग पे बैन है, जिसके डिस्प्ले पे बैन है, जिसकी स्पॉन्सरशिप पे बैन है, प्रमोशंस पे बैन है। पहले तो आप लोगों को यहाँ नजर आते होंगे, अब पेप्सी वगैरह तो है, पहले टोबैको के वो क्रिकेटर्स हों उनकी शर्ट्स पे था, अब उन सब पे बैन है। बट स्टिल इमेजिन, सिंगल स्टिक्स जो हैं वो बैन है खरीदनी, लेकिन यंगस्टर्स जाके एक 5-5, 10-10, 20 रुपए की एक सिंगल स्टिक खरीदते हैं, बिकॉज आई एम सॉरी, हमारी इन्फोर्समेंट का इशू है। एंड ये नहीं, अवेयरनेस प्लस इन्फोर्समेंट। किसी ने पूछा स्कूलों से 50 मीटर दूर या 100 से 50 मीटर्स के अंदर अंदर नो शॉप, नो ग्रोसरी शॉप कैन सेल टोबैको, नो शॉप। बट किसी को ये पता है? कोई या तो हमें स्कूल के इर्द गिर्द के लोगों की, टीचर्स की, उनकी अवेयरनेस करनी पड़ेगी। लॉज हैं,
लॉज पे काम सही हो रहा है, लेकिन ये अवेयरनेस हमें आप लोगों को भी जाके एक्सप्लोर करनी है। आप लोग ये देखें 50 मीटर्स तक कोई टबैको का प्रोडक्ट जो है वो बिक नहीं सकता, लेकिन चीजें बिक रही हैं। वो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप की बात हुई, मुझे समझ नहीं आई थी, तो मैंने खुरम से पूछा, वो वेलो है, वेलो को किसने प्रमोट किया था? फवाद खान ने। Can you imagine that? I don't know whether he was, I'm a fan of his, but whether he was aware what he's promoting, or whether, I don't know how much money. Imagine how much money gets involved in this. Because cigarette के ऊपर, smoking के ऊपर, tobacco use पे ban शुरू हो रहा है, तो अब लोग different products पे जा रहे हैं। वेलो आ रहा है, ये वो आ रही है, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आ रहा है, H&Ds आ रहे हैं। सो इट्स लाइक लॉज बनते जा रहे हैं और हम लोग उस पर काम करते जा रहे हैं, लेकिन काउंटर भी हमें बहुत ज्यादा हो रहा है। सो यही है। Can we take next question? Yes, so sorry. that It becomes emotional a little bit. Rabia, please. Mic. Assalamu alaikum. This is Afrin from Namal University. Basically, मेरा question तो State Minister से था, लेकिन as she left, तो I would like to question from all of you. मेरा question ये कि मैम ने भी अभी जैसे कहा कि we have a strong lobby of this mafia जो कि tobacco को सेल करता है, और we cannot deny this fact कि ये जो माफिया है, ये जो कैपिटलिस्ट माफिया है, ये गवर्नमेंट को क्रिएट करने में या डिसॉल्व करने में बहुत रोल प्ले करता है। तो गवर्नमेंट जो है इस सारी सिचुएशन में कहाँ स्टैंड करती है? अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करती है फॉर एग्जांपल टैक्सेस या प्राइसेस इंक्रीज करती है ताकि हर कोई अफोर्ड ना कर सके, तो क्या रिस्पॉन्स होगा? क्योंकि आजकल हमने देखा है कि ट्रेंड है कि आपके पास अगर आपकी आपके जो ऑप्शंस हैं उसके अगेंस्ट अगर गवर्नमेंट जाती है या कोई भी अनाउंसमेंट होती है या लॉज पास होते हैं, तो आपका एक कॉमन सा ट्रेंड है कि आप प्रोटेस्ट के लिए रोड पे निकल आते हैं, रोड बंद कर देते हैं। तो जो कैपिटलिस्ट आपके पास एक माफिया है जो कि टोबैको प्रोड्यूसर है, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करी है? एज द स्टेट मिनिस्टर सेड के हमें सोशल पनिशमेंट देनी है, जो कि चलें ठीक है। उन्होंने कहा कि जी माएँ बच्चों से बात ना करें, माएँ बच्चों से बात करती हैं इवन दो दे आर अल्कोहल ड्रिंक एडिक्ट, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो आपकी स्टेट है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया टोबैको सेल, तो हमारी स्टेट इस तरह के एक्शन क्यों नहीं ले सकती? और व्हाई वी आर अंडर द प्रेशर ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास ऑलवेज, और हम लोग हमेशा इसी तरह के आइडियाज के साथ आते हैं कि हम लोग खुद कुछ करें, स्टेट कुछ ना करे। द अदर क्वेश्चन इज विद फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। तो आई वुड लाइक टू आस्क हिम कि हम देख ये चीज़ काफ़ी कॉमन है हमारे पास कि जो ड्रग है वो जेल में भी डिलीवर होता है थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। तो आई वुड लाइक टू आस्क हिम कि क्या ये बात रियल है कि वाकई जेल में भी ड्रग्स जाते हैं, और किन सोर्सेज से जाते हैं? अगर जाते हैं तो यही तो वो लोग हैं जिन्होंने उनको इस सब को रोकना है। तो और अगर जा रहे हैं तो इस पे इनका क्या रिस्पॉन्स है, ये क्या एक्शन है, ये क्या किस तरह इसको ये कॉम्बैट कर रहे हैं? Okay, thank you very much. Question is very well taken. Sir, I think shall we take 2-3 more questions and then we'll end up the round of discussion. The first question would be addressed by, sorry. हिट करने लग गया टोबैको के साथ साथ ड्रग्स को भी, और सर इज वेरी मच हियर और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। Exactly. For the taxation thing, I think you could answer, Hashmi Saab. Sure, please. Thank you very much for the question. आपका बहुत ही relevant, pertinent question है, and actually your question goes to the very heart of the matter. Society जो है it's like a ship, और जो गवर्नमेंट होती है, क्योंकि आपकी जो स्टेट बनती है वो इदारों से और मुआशरे से बनती है, तो जो गवर्नमेंट है वो रडर है। विदाउट द गवर्नमेंट द शिप विल गेट नोवेयर। तो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट एज द लीडर उस सोसाइटी की एफर्ट्स को लीड करती है, इनिशिएट करती है। ये क्वेश्चन हुआ जो आपका, ये से पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हुआ था। इसमें मेरा ये ख्याल है कि हमारे पास एज अ सोसाइटी और एज अ गवर्नमेंट 3 ऑप्शंस हैं, और तीनों पे हमें काम करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारी वो ये है कि जैसे सब ने कहा, इसके ऊपर एक जनरल कंसेंसस है कि एक अवेयरनेस जो है उसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि वी हैव जस्ट रियलाइज्ड
जो भी बातें डॉक्टर साहबा ने की हैं, जो आपने की, सॉरी आपका खुरम हाशमी साहब ने बातें की हैं, बहुत सी बातों से एटलीस्ट आई वाज नॉट अवेयर एज अ सिटीजन, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए भी बहुत सारी बातें उसमें नई थी। एक तो ये है कि वी आर रीमिस इन आवर ड्यूटी टू क्रिएट अवेयरनेस, और उसके लिए मेरा ये ख्याल है कि वी आर रीमिस एज अ कलेक्टिवली। ये किसी एक एनजीओ का काम नहीं है, मुआशरे का काम भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जो एफर्ट है इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द लीडरशिप, एंड लीडरशिप इज द गवर्नमेंट। एक सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट से ये सारी चीजें जो हैं आगे चलती हैं। कंसेंसस बिल्डिंग भी जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं। सजाएं नहीं होती या इफेक्ट नहीं होता पॉलिसीज का, स्ट्रेटजीज का, उसकी भी वजह ये होती है कि एक कलेक्टिव विल आप बिल्ड नहीं कर पाते। जब एक मुआशरा एक कलेक्टिव विल बिल्ड नहीं करता तो इम्पैक्ट नहीं होता आपके लॉज का भी और आपकी पॉलिसी का भी। तो ये एक पहला काम तो हमें ये करना है कि वी हैव टू स्टैंड टुगेदर, एक कलेक्टिव विल हम डेवलप करें विद अ कंसेंसस, विद द गवर्नमेंट इन द लीड। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है टैक्सेशन के हवाले से, जो आपने बात की, माफिया की बात पहले भी एक यंग मैन ने की, उस वक्त भी आई वाज अबाउट ऑन द वर्ज ऑफ आंसरिंग दैट क्वेश्चन। माफिया से देखें पूरी दुनिया में अब ये हो रहा है कि वो डील कैसे कर रहे हैं। टैक्सेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल, और बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारा जो बैड बिहेवियर है उसको फाइन के साथ डील किया जाता है, उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाता। तो एक तो ये कि हमें अपनी टैक्स रिजीम को, जाहिर अगेन इट्स फॉर द गवर्नमेंट टू डू इट, आप मैं एक कॉमन सिटीजन नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में अगर इसको इंटीग्रेट करे कि वी हैव टू टेक अ कलेक्टिव पोजीशन ऑन दिस, वी हैव टू रेज द टैक्सेस, वी हैव टू पेनलाइज द पोल्यूटर, और वो सारी चीजें जो कि आप देखें कि अभी बहुत सारे मुल्कों में वो हो रही हैं और हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए। तीसरी जो बात है, जो तीसरी ऑप्शन है हमारे पास इन दो के अलावा, वो है कि sorry, I lost track of it. There's a very important third element which is the incentive. आप देखें वीनिंग जो होती है, एक आप एडिक्ट को लें, आप एक टेररिस्ट को लें, आप किसी भी आदमी की को, इवन पॉपी कल्टीवेटर है, कोई भी बंदा, उसको आप वीनिंग करवाना चाहते हैं, आप कहते हैं यार ये काम छोड़ दो और तुम कोई नया काम कर लो। तो उसके लिए भी अगेन देयर इज अ रोल फॉर द गवर्नमेंट के जब तक आप अल्टरनेटिव मींस ऑफ लाइवलीहुड किसी को प्रोवाइड नहीं करते तो वो जो काम कर रहा है वो उसको नहीं छोड़ेगा। तो इंसेंटिवाइज करना अल्टरनेटिव क्रॉपिंग को या अल्टरनेटिव फार्मिंग को, अगेन क्योंकि पॉकेट्स हैं, आपकी जो टोबैको ग्रोइंग है इसकी पॉकेट्स हैं, तो गवर्नमेंट अगर इसको एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी एड्रेस करती है और उसके ऊपर काम करती है तो अगेन आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद समथिंग। तो ये तीन चीजें हैं। ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू टेक सम टाइम टू टेक द इफेक्ट, but I don't see any other way of dealing with this until we combine these three options. Again, coming back to the main question, who is going to do it? Obviously, the government lead karti hai aur society follow karti hai. Thank you very much. So I'm afraid that I would not be able to take more than 3 questions. And after that, I would request, after 3 questions and answers, I would request Dr. Saeed Kaleem Imam, the chair of today's session, for the concluding remarks. So if you can give him the mic, please, then 2 and then 3. Assalamu alaikum. Thank you very much for your time. Overall, आपकी discussion बहुत interesting रही है। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है और मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर हूँ। आपकी डिस्कशन में एक पैरामीटर जो आप स्मोकिंग वगैरह की बात कर रहे थे, बाकी कुछ ड्रग्स की बात की गई जिसका नाम मैं पहली दफा सुन रहा था। हम स्मोकिंग को देख सकते हैं, स्मोकर है वो स्मोक करेगा, पता चलेगा, उसकी कपड़ों से स्मेल आएगी वगैरह वगैरह। जो बाकी हार्डकोर ड्रग्स की जो आप बात कर रहे थे, उनको एज अ फैकल्टी मेंबर या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? क्या कोई टेक्नोलॉजी कोई उसके लिए लायबल एग्जिस्ट करता है? आपके पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? इसको कैसे कैटर करेंगी? क्योंकि हमारे इस्लामाबाद में ये ग्रोइंग ट्रेंड है जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है, और ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज में बल्कि कॉलेजेस और स्कूल में फैल रहा है। सो हाउ वुड वी safeguard our next generation if we are not woken up right now? Thank you.
I would agree that the discussion was interesting because people are still pouring in. So the second question from that lady, please. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीज है, मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा क्वेश्चन जो था वो सबसे पहले था, लेकिन उसके आंसर्स काफ़ी लोग दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो टोबैको यूजर्स हैं, जिस तरह ड्राइवर्स हैं, जैसे कि हम लोग डेवो में सफ़र करते हैं, स्काईवेज में, या ट्रक ड्राइवर्स हैं जो लेट नाइट तक ड्राइविंग करते हैं, तो वो जागने के लिए जो है वो स्मोकिंग करते हैं। उसके अलावा आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। अब मैं मतलब जैसे असाइनमेंट का स्ट्रेस हो गया, एग्जाम्स का स्ट्रेस हो गया, या फिर कोई टीचर ऐसा आ गया जो बहुत ज़्यादा बुक्स पे बुक्स दिए जा रहे हैं तो उसका स्ट्रेस है, तो इससे भी लोग जो हैं वो स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए। और आजकल जो यंग जनरेशन है स्पेशली, ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड बन चुका है कि ब्रेकअप्स हो जाते हैं तो उसके बाद स्मोकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अलावा इसके क्या अल्टरनेटिव्स क्या होने चाहिए? ये तो ठीक है कि रूल्स और लॉज जो हैं वो तो बन रहे हैं और वो तो गवर्नमेंट लेवल पे बनने भी चाहिए कि या क्या स्मोकिंग से, जैसे कि अब कोई भी चीज़ होती है उसके अल्टरनेटिव, जैसे हम लोग टाइम जो है वो कहीं और लगाएं, यूज़ करें, लेकिन स्मोकिंग एक एडिक्शन है और एडिक्शन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको छोड़ने के लिए क्या अल्टरनेटिव्स इस्तेमाल किए जाएं कि जो स्मोकिंग को है वो छोड़ सके? So your question is about alternative जी, options. और इसके अलावा एक मेरा और भी क्वेश्चन है कि एडवर्टाइजमेंट पे आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि स्मोकिंग की एडवर्टाइजमेंट ना दी जाए, कि उसके जो सिगरेट हैं, जैसे अब मुझे नाम तो इतने खास नहीं आते, तो उनकी ना दी जाए, लेकिन जो है वो फिर इस तरह की एडवर्टाइजमेंट की जाए कि स्मोकिंग आपके लिए हार्मफुल है। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जरूर होनी चाहिए कि स्मोकिंग हार्मफुल है, वो आपकी लाइफ को डेंजर में डाल रहा है, तो ये भी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। और एक तीसरा सवाल है कि जो वोटर्स हैं टोबैको के, उनकी इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा अगर उनके जो है टोबैकोस के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप लोग टोबैकोस को है वो एक्सपोर्ट ना करें। और टोबैको के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस में भी जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। मतलब इससे अल्टरनेटिव अगर आएगा तो वो भी कुछ इस तरह का ही आना चाहिए कि जो कि मतलब इन सब चीजों पे जो है वो काबू ला सके। तो वो क्या ऐसी चीज है? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जी थैंक यू वेरी मच। पहले जुनैद साहब का क्वेश्चन। अच्छा सर, आपका इशू है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जो स्मोकिंग की नई आ रही हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दे आर यूजिंग दैट। सो इफ़ यू विच यू ऑब्वियसली हैव नॉट वॉच देयर वीडियोज़, एंड डॉक्टर साहब वाज टॉकिंग अबाउट फवाद जिसने ये इन वीडियोज़ में पार्टिसिपेट किया है, दोज हु बेसिकली आर प्रमोटिंग वेलो एंड अदर निकोटीन पाउचेस। तो उन लोगों की बॉटम लाइन ये है कि दिस इज स्मोक फ्री, नॉइज फ्री, स्मेल फ्री, एंड ऑब्वियसली योर पेरेंट्स, योर टीचर्स और योर फेलोज हुएवर इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, दे कैन नॉट सी दैट। तो उनकी पंच लाइन ये है इसको प्रमोट करने की। तो अनफॉर्चुनेटली दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। हम इसी चीज को कर रहे हैं कि इन चीजों को बैन करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इनको रेगुलराइज या रेगुलेट करने की कोशिश करें। वी एज अ नेशन डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी येट, कि जैसे आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हर क्लास में ये है कि वो इट लुक्स लाइक अ यूएसबी बट दैट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वो रखा हुआ था, यू नोबडी कैन आस्क देम कि ये क्या रखा हुआ। तो आपके क्वेश्चन का ये है कि वी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड दैट इज व्हाट इज टोबैको इंडस्ट्री डूइंग टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट्स, और पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर। और एक और पहले क्वेश्चन था किसी का, तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि एक टोबैको इंडस्ट्री ने, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने, दे हैव स्पेंड 1 billion pounds in advertising these products in Pakistan and Kenya only। 2 कंट्रीज के अंदर उन्होंने 1 billion pounds का खर्चा किया है टू एडवर्टाइज और प्रमोट करने के लिए। इसीलिए हम लोग, जाहिर है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और ये इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। दूसरा आपका जो ट्राई क्वेश्चन 1 क्वेश्चन था, उसमें फर्स्ट थिंग इज के ड्राइवर्स यूज कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगेन एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस, there is an SRO which is a statutory regulatory order by the Ministry of Health। उस SRO का नंबर है 654। आप वो डाउनलोड कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की साइट से और उसको पढ़ सकते हैं। In fact, all the public transport drivers and conductors are responsible for ensuring that nobody smokes in public transport। ये हमारा लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। अब मेरा उस पर क्वेश्चन ये था व्हेन दे वर मेकिंग दिस, तो मेरा यही क्वेश्चन था कि हाउ कैन यू टेल देम कि भाई तुम रोक लो,
या ड्राइवर खुद स्मोकिंग कर रहा है तो हम क्या करेंगे? तो वो मतलब दैट आंसर्स योर क्वेश्चन के वो गोइंग ऑन टू योर सेकंड क्वेश्चन व्हिच वाज रिलेटेड टू साइकोलॉजी. प्रॉब्लम ये है कि ये ही इज नॉट स्मोकिंग बिकॉज ही वांट्स टू स्टे अवेक. ही प्रॉब्लम ये है कि ही स्मोकिंग बिकॉज ही स्टार्टेड स्मोकिंग. वो अगर स्टार्ट ही ना करे, आई हैव नॉट स्मोक्ड इवन अ सिंगल पफ इन माय एंटायर लाइफ. मैं ड्राइव भी करता हूँ लॉन्ग, मैं रात को जागता भी हूँ, एग्जाम भी देता रहूँ आप लोगों की तरह, स्टूडेंट भी रहा हूँ ऑल माय लाइफ, स्टिल स्टूडेंट. तो अब मुझे कोई इशू नहीं है. आई हैव अदर मीन्स टू. जो आपने पूछा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये टोबैको इंडस्ट्री का इस तरह से है कि वो कहते हैं जी कि आप ये जो जैसे अभी वेलो का जिक्र किया, ये इसको एज अल्टरनेट इस्तेमाल कर लें. सो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर. व्हाई आर दे नॉट टेलिंग यू जस्ट टू क्विट? आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी हार्ड टू क्विट, लेकिन हमारे पास सिटीजन क्लिनिक है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर एग्जिस्ट कर रही है. आप हेल्पलाइन कॉल करके उनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं. एड्स जो भी वो दे रहे हैं वो डेफिनेटली हार्मफुल हैं. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि देयर इज अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पब्लिक हेल्थ एंड टोबैको इंडस्ट्री. टोबैको इंडस्ट्री कभी भी पब्लिक हेल्थ के फेवर में काम नहीं करेगी. ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए, और तब आप इसे, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दैट इज वेयर वहाँ उससे आगे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज वन एक उसमें कीनिया में एक जगह पे वाटर की प्रॉब्लम थी. सो वन ऑफ द बेवरेजेस कंपनीज दे वेंट इन और दे सेड कि जी यहाँ पे पानी नहीं है इसलिए आप कोक पी लें. सो द पॉइंट इज कि टोबैको इंडस्ट्री आपको एक चीज से छुड़वाने के लिए, सिगरेट से छुड़वाने के लिए, प्रीवियस सेंचुरी वाज नोन एज द सिगरेट सेंचुरी, दिस सेंचुरी इज नोन एज द नोवेल प्रोडक्ट सेंचुरी. तो आप लोगों को वो जो इस चीज पे हुकअप कर रहे हैं, बेसिकली दे आर मेकिंग प्रॉफिट. प्लीज अंडरस्टैंड द फंडामेंटल डिफरेंस पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टोबैको इंडस्ट्री एंड हेल्थ. वो कभी भी आपकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं सोचेंगे. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Wasim Iftikhar Janjua. Now I would request Dr. Saeed Kaleem Imam for the concluding remarks. बस एक पॉइंट. Okay. I'm really sorry. असल में डॉक्टर जुनैद आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, और जब हम बात करते हैं ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, तो वन ऑफ द जिसे कहते हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, तो प्राइमरी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स वो हैं. जो जितनी बातें इन लोगों ने की उसके साथ वन ऑफ द एलिमेंट्स जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग a part of the faculty है कि we have to keep up to the knowledge ourselves in order to monitor and evaluate the situation to make sure कि हम in compliance हो. जहां पर हम बाकी चीजों का ध्यान रखते हैं कि इनका जो बिहेवियर है स्टूडेंट्स का वो up to the mark होना चाहिए, there are certain do's and don'ts, there must be some kind of enforcement monitoring. अपना जो इंस्टीट्यूशन का सिस्टम्स होते हैं उनको शायद हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत होती है, जिसके लिए आप जैसे लोग जब कहते हैं कि हमने आज ये सीखा, तो शायद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई कि यू नीड टू गो बैक, रिपोर्ट एंड रेप्लिकेट, डेवलप इफ नॉट एनफोर्स ऑलरेडी, इफ नॉट बीइंग एनफोर्स ऑलरेडी. आपको ये करना पड़ेगा. काफी नॉवल चीजें आ रही हैं जो हमारे लिए चैलेंजेस बन रहे हैं, बट दे आर अंडर ए वेरी रॉन्ग प्रीमाइस कि वो ऑल्टरनेट्स ऑफर कर रहे हैं. दे आर नॉट हाईलाइटिंग वो कितना वो है. अभी बेटी ने यहाँ पे जिक्र किया था कि आज के जवान, ये आज के जवान कभी भी उसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर में नहीं रहे. ये हर एज, हर जनरेशन के जवान अपने अपने टाइम में साइकोलॉजिकल डिफरेंट प्रेशर्स में रहे. इंडस्ट्री या टोबैको यूज की, सिगरेट्स की हिस्ट्रीज जो है सेंचुरीज से भी पुरानी है. टोबैको कंट्रोल या पब्लिक हेल्थ का फिनोमिना जो है उसको तो शायद अभी 50 साल भी नहीं हुए. मगर ये चीज कभी मत भूलिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने पास से हटाया है इस चीज को. अभी यहाँ पर न्यूजीलैंड की मिसाल दी थी कि न्यूजीलैंड ने सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करवाया. न्यूजीलैंड के डेवलप्ड सिस्टम्स का मुकाबला हम पाकिस्तान के डेवलपिंग एक कंट्री का मुकाबला अगर करना चाहते हैं, वी नीड टू एम्पावर आवर सिस्टम्स, जिसके लिए सर ने कहा कि वी नीड टू हैव ए को-ऑप्ट रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जिसमें हम सारे आ रहे होते हैं, वेदर फ्रॉम मीडिया, वेदर फ्रॉम सिविल सोसाइटी, वेदर फ्रॉम एक्सपर्ट्स, एजुकेशनिस्ट. हम सबको आना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा. बट फॉर दैट हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी, सो कैन वी कैन डिफरेंशिएट कि व्हाट इज हार्म रिडक्शन, व्हाट इज अल्टरनेट सेसेशन ऑफर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. एक तरफ तो आपने कह दिया कि जी ग्रीन लीफ फोटोसिंथेसिस में काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम इसकी वो रोक दें. देयर इज एन अल्टरनेट ऑप्शन कि बतौर निकोटीन यू हैव इट्स मेडिकल यूजेस. आप उसको मेडिकल ड्रग्स में रेगुलेट करके उसमें इस्तेमाल करें, ड्रैप के अंदर लेकर आए. जरूरी है कि उस निकोटीन को आपने फोटोसिंथेसिस की वजह से सिगरेट की शक्ल में ही अपनी नस्ल को आगे खराब करते रहना है? क्या हम में से लोग थोड़ा सा ये बिल्कुल वो कह रहे हैं सोशियो उस पर एस्पेक्ट में आ जाता है.
हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं है जो ये तंबाकू इस्तेमाल कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और हमें नहीं पता, या तो हमें नहीं पता। डॉक्टर जुनैद ने तो नया चैलेंज दे दिया ना, जिसका हमें नहीं पता था और आज पता लग गया। मगर जिसका हमें पता था, क्या आप और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा, बहन, भाई XYZ सिगरेट पिए या टोबैको यूज करे, प्रोडक्टिवली ना जाए? और लास्टली, फॉर ए इकोनॉमिकली चैलेंज कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ही उसके अपने बिजनेस के ऊपर है, क्योंकि स्टेट के अपने मींस ऑफ जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज में चैलेंजेस हैं, यहां पर सच इंडस्ट्रीज कम इन and they do in fact influence the existing situation, and this is not just the case of Pakistan. पाकिस्तान हमेशा टेस्टिंग ग्राउंड रहा है जब भी हम साउथ एशिया की बात करेंगे। whatever challenge यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है, the same challenges are being reflected in our neighboring countries including India, Bangladesh, Nepal, Afghanistan. पॉपी वो लोग नहीं कर रहे थे, आपने शुरू कर दिया। बाय द टाइम रियलाइजेशन आया, आपके पास से खत्म हुआ, वहां दोबारा होना शुरू हो गए। These things happen. लास्ट जो चीज है वो हमेशा कंसिडर ये किया करें, सच इंडस्ट्रीज, इनका बिहेवियर डिफरेंट क्यों होता है इन डेवलप्ड कंट्रीज विज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज। आप जब भी मुकाबला करेंगे अपना, आप यूके से मुकाबला करते हैं, यूएस से मुकाबला करते हैं, क्या आपके हेल्थ सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हैं? कैन यू कंट्रोल द यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स? क्या ये जो नई डिवाइसेस आ रही हैं विच आर इन अदर कंट्रीज मेडिकली रेगुलेटेड हैं बाय द मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रिस्क्रिप्शन, वो प्रैक्टिस यहाँ पर है? ये यहाँ पर जो आपका वेब स्टोर है वो बताता है कि नहीं जी, आप 5 सिगरेट दिन में पीते हैं तो आप एक शीशी जो ले जाएं, उसको एक हफ्ते में आप कंज्यूम करेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक या अदर डिवाइसेस। हु गेव हिम द राइट? एक तो उसको भी चेक करने की जरूरत है कि वो किस तरह मेडिकली इतना कॉम्पिटेंट हो गया कि ही कैन without having any prior test on your physical test on your body to understand the chemistry going on, the connectivity going on between your body organs, starting from the heart to mind to lungs to abdomen to muscular. उसने किस तरह वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि 5 सिगरेट स्टिक्स की जगह आप एक जो वो 30 ml की लिक्विड है उसको आप 5 डेज के अंदर कंज्यूम करेंगे, नॉट लेस देन दैट। चीजों को हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। और ये प्लेटफॉर्म्स, जिस तरह ये हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस तरह के कई और प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सबके हाथ में स्मार्ट डिवाइसेस हैं, यू हैव द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यू आर माशाल्लाह स्मार्ट इनफ टू मतलब एक्सप्लोर गूगल एंड देन मेक द कंपैरिजन फॉर योर ओन सेल्व्स। हमें तो आपकी सपोर्ट चाहिए होती है, वी आर हियर। आप हमें जब भी पकड़ेंगे हम आपके पास बैठेंगे, हम आपसे बात कर रहे होंगे। ये चीजें हमारे लिए भी उतनी ही नई है जितनी आपके लिए। दिस फिनोमेना 4 साल पुराना है, जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स या वेप्स की इन चीजों की बात करें, सिगरेट से ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। लास्ट वर्ड, कोई भी आपको इनका यूजर ऐसा नहीं मिलेगा जो सिर्फ ये यूज कर रहा हो। वो अगर पहले नहीं करता था इसके साथ, वो सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट करता है, ये भी प्रूवन है। विच इज द रीजन कि 1 साल के बाद आपके यूके ने ही कहा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको अलाउ किया था, कि हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि हमारा यूथ आफ्टर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स स्मोकिंग की तरफ जा रहा है। एंड लास्टली, यही वो रीजन था कि कैलिफोर्निया ने रिसेंटली इसको बैन किया है, क्योंकि 1 साल के बाद उन्हें पता लग गया कि ये जो आईकॉस हैं या इस तरह के जो सिमिलर डिवाइसेस हैं जो पाकिस्तान में लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, इनके वो नुकसानात हैं जो वो इंडस्ट्री डिनाई करती है। ये वहां पर विक्टिम्स को $मिलियन की कंपनसेशन हुई है तो कोर्ट सेटलमेंट्स, कि आपके यहाँ पर हेल्थ कॉस्ट गवर्नमेंट तो कर ही नहीं सकती, आप लोग खुद अपने घर में बेयर कर सकते हैं एक अदद कैंसर का या थ्रोट का इलाज। आपका एक दांत की डेंटल कॉस्मेटिक जो आप ये रूट कैनाल कराते हैं, जो एक जमाने में कहीं 3,000 रुपए में होती थी, वेरी लग्जरी, just in 3 years time they have to go for the lunch also. It has gone over 100,000 rupees. Any final comments, Dr. Amna? आपने पूछा था कि how do you stop this and how do you manage stress? सबसे proven चीज है willpower. The people who decide if they quit one day, good, slowly भी कर सकते हैं. There are medicines in the shops and stuff which help you, like Shantex and others. But what is proven is that 40% is counseling of the harms, awareness of smoking. आप किसी ऐसे शख्स को काउंसल करें, अगर आपको पता चल जाए, ये जो आप लोगों के सिगरेट के पैक के ऊपर तस्वीरें आती हैं जिसके ऊपर बात है, दिस इज ऑल व्हाट वी आर वर्किंग फ्रॉम, कि कुछ लोगों को अवेयरनेस हो कि भी ये कॉज करता है, दिस इज अवेयरनेस।
और हमने ये रिसर्च से सीखा है कि 40% पीपल क्विट स्मोकिंग इफ दे आर काउंसल्ड, एंड स्पेशली अगर गवर्नमेंट में जो एडिक्शन वाले डिपार्टमेंट्स हैं उसमें टोबैको की काउंसलिंग पे हुआ है, बट हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है और इसको सीरियस लेने की जरूरत है. काउंसलिंग रियली हेल्प्स बिकॉज टोबैको ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर तो शायद अफोर्डेबल क्लास ले रही है. स्मोकिंग जो बाकी वेलो, नस्वार, गुटखा, ये चीजें लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप लेता है जिनको अवेयरनेस भी इतनी नहीं है. सो काउंसलिंग इज द की. Mr. Shahzada Sultan, sir, please. Thank you very much. I have nothing further to add. Thank you so very much. Naseem, sir? Okay. Thank you very much, Wasif. I think it was a very educative session, and बहुत सी बातें हुई और बहुत सी नई बातों को पता चला. मैं कंक्लूड करते हुए सिर्फ 2-4 बातें करूंगा और साथ में जो सवाल थे जुनेद साहब के और रीच के, तो मैं वो भी जल्दी से उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा. जुनेद साहब ने जो बात की कि हमें कैसे पता चले कि ये तो सिगरेट पीते हुए तो पता चल जाता है, आइस और एस्टेसी से पता नहीं चलता. तो उसमें जो मॉडर्न मेथड्स हैं जो अप्लाई किए जा रहे हैं, आपको बच्चे के बिहेवियर से पता चलेगा. आप उसके बिहेवियर को देखें, नंबर 1. नंबर 2, मुसलसल उसके जो कोलीग्स हैं उनकी आपस में एक असेसमेंट ज़रूर कराया करें. जिस तरह यूएन में होती है 360 एवेल्यूएशन होती है कि लोग बगैर अपने नाम दिए हुए दूसरों के बारे में बता रहे होते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड. और इसका हल ये है कि आप मोटिवेट करें लोगों को. मोटिवेशन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, एंड ट्रस्ट इज़ द एसेंस बेसिकली. और जिस तरह अरीश ने बात की, अगेन स्ट्रेस होता है. मैं तो शायद स्ट्रेस नहीं देता किसी को, अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन ये कि मैं तो सिर्फ बताता हूँ कि आप पढ़ लें कुछ. आप सब पास हैं, आप सिर्फ पढ़ने की कोशिश करें और काबिल बन जाएं. और ये जो 1 घंटा या 1.5 घंटा क्लास में आप रहते हैं, कुछ सीख के चले जाएं और आने वाली ज़िंदगी में उसको अप्लाई करना सीख लें. दैट इज़ व्हाट एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट, कि आप सीख लें कि किसी चीज़ को आपने कैसे करना है. और डॉक्टर साहिबा ने जिस तरह फरमाया कि मेरे नज़दीक स्ट्रेस को बेस्ट तरीका है रिलीव करने का, हैव अ बैलेंस्ड लाइफ. एंड बैलेंस्ड लाइफ मीन्स डू एवरीथिंग विच अ पर्सन डज इन हिज लाइफ, लाइक प्ले, प्रे, मूव अराउंड, वेयर गुड क्लोथ्स, सिट विथ योर फ्रेंड्स. लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनीबडीज लाइफ इज health and association. So you need to have friends and you need to have good health. These are 2 very key elements in your life which makes a difference. Alternative यही है reach के उसमें कि you talk to yourself. Like I keep on saying, take a deep breath, get detached, move away from what is bugging you. We all are bullied, we all are harassed. There's none of us sitting over here who is not harassed at some time in his life. Workplace harassment होती है, मुख्तलिफ किस्म के challenges आते हैं. So anyhow, it was a very interesting session. और ये जो बात की एक जो बात हुई थी उसके हवाले से मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि हम जो हमारे एक शुरू में एक सवाल हुआ कि जो लोग, बात ये कि कैपिटलिस्ट तो खुद कानून बनाने में शामिल होते हैं, तो वो ऐसा क्यों कानून बनाएंगे जो कि जिसकी वजह से उनको नुकसान हो. मोटरवे पुलिस में 2 ऐसे कानून बने हुए हैं जो आज तक एनफोर्स नहीं हुए. फॉर एग्जांपल, सड़कें टूट रही हैं, तो एक वजह ये आई कि एक्सल लोड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वजन उसमें रखा जाता है. कानून पास करा लिया हमने, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, कहते हैं ठहर जाएं, स्ट्राइक हो जाएगी. इसी तरह हम कहते हैं गाड़ी की तेज़ रफ्तारी बहुत ज़्यादा होती है, हमने फाइन्स जो होते हैं उसको रिवाइज करा लिया. अब हम 10,000 फाइन कर सकते हैं तेज़ रफ्तारी पे, 120 को अगर क्रॉस करें 7 से 10,000. लेकिन हमें क्या जाता है कि नहीं, आप इन्फोर्स ना करें, हड़ताल हो जाएगी. तो एक तरफ कानून भी बनता है, कानून इतना ओवर लेजिस्लेटेड वी आर, और उसके साथ साथ जो हो जाते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. जो एक और बात की जिससे शहजादा सुल्तान साहब was answering of law, the issue is of governance, the issue is house being disorder. ये जो वीड्स की बात हो रही है या बहुत सी जगह प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देखते, उनकी बुनियादी तौर पे बात ये है कि देयर इज अ सीरियस डिसऑर्डर हाउस, कि शो मी द मैन एंड शो मी द रूल वाली एक कहानी है. और इसकी यही वजह है बुनियादी तौर पे कि आप कानून वो नहीं नाफिज कर सकते. अभी मोटरवे में कुछ दिनों पहले ही एक चलान हुआ है और वो सारे लोग मुअत्तल हो गए.
अगर वो साहब ये कहते हैं यार मेरी बिल्कुल चलान करें और जल्दी से करें ताकि मैं यहाँ से जाऊं, तो एक तो वो लोग मोटिवेट हो जाते, दूसरा वो किसी और को नहीं छोड़ते और वो और अच्छी तरह इन्फोर्स कर रहे होते लॉ। लेकिन जो जिम्मेदार है स्टेक होल्डर कहता है मुझे आप मेरे ऊपर कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। और ये टोबैको कंपनी हुई, एनवायरनमेंट हुई, यहाँ अब देखें सारी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, सारे जंगल कट रहे हैं। अगर आप इस्लामाबाद 15-20 साल पहले होते तो आप देख हैरान होते कि इस्लामाबाद कितना बड़ा जंगल था, अब सारा कट गया। रोडें अच्छी लगती हैं, हम जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सो फाइनली आई वुड से कि इफ्तिखार साहब ने बड़े अच्छा हमें स्टैटिस्टिक्स दिए, एंड आई थिंक दैट कैन प्रिडिक्ट us in our policies, and that can actually tell us how to move ahead and give us a good way forward. और इन रिकमेंडेशन में प्राइस और टैक्स की बात की, अल्टरनेटिव्स की इन्होंने ऑप्शंस दी, टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस की बात की। आई थिंक दे आर गुड रिकमेंडेशंस। खुदम हाशमी साहब ने बड़ा अच्छी बात की, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री में कैसे नाफिज होते हैं टोबैको कंपनी, एनवायरनमेंट और बाकी रूल्स की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें सारे डेवलप कंट्रीज ये समझ चुके हैं कि चीज़ें सिर्फ कानून से ठीक होंगी, कानून नाफिज करने से होंगी। आप जितना मर्जी उनको किसी मिथ माइथोलॉजी से डरा लें, वो नहीं डरेंगे। अगर उसको ये पता चल जाए मेरे घर टिकट आ जाएगा और मुझे 100 पाउंड पे करने पड़ेंगे या $100 देने पड़ेंगे, आइंदा वो एहतियात करेगा। और किस तरह डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज उसको आगे चलाते हैं। Again, Dr. Amna has very rightly put in when she talks about direct and indirect effects of tobacco on ecology. She also mentioned the third hand smoke की बात की उन्होंने, which was very interesting. वो बात की उन्होंने greenhouse emissions and how जो SDG goals हैं। देखिए लोगों को, ह्यूमैनिटी को ये पता चल गया कि आने वाली दुनिया में मुश्किलात आ रही है। That is why they came up with SDG goals. उन्होंने कहा सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा, एक जगह का डिस्ट्रक्शन या बुराई हो रही है वो बाकी सबको ले डूबेगी, तो लिहाजा SDG गोल्स बने। शहजादा सुल्तान साहब ने बड़ी अच्छी एनालॉजीज दी, एंड समटाइम यू हैव टू पिक अप सर्टेन थिंग्स एंड फॉर्म एंड इंड्यूस कि किस तरह सोसाइटी में घर तबाह होते हैं, किस तरह आप देखते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट कैसे रिस्पॉन्स कर रही होती है, किस तरह समथिंग विच इज़ वेरी ईजी एंड अवेलेबल and attraction subsequently takes you away. And he has a very बड़ा अच्छा इनका एक्सपीरियंस है। आज ये ज़्यादा बात नहीं की, मेरा लिहाज कर रहे थे मेरे ख्याल से ये। और डॉक्टर रुमीना अगेन पार्लियामेंटेरियन, और हैशटैग की बात की उन्होंने, और उन्होंने दूसरी नए जो जार्गन्स आए उसकी बात की। लेकिन अगेन देखें जितनी भी तब्दीली आनी है, बुनियादी तौर पे देखें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लोग रह रहे हैं, वही लोग चुनते हैं कुछ लोगों को कि आए जी आपको हम कुछ पावर देते हैं, अपने कोई प्रिविलेजेस हम सरेंडर करते हैं, अब आप हमारी रहनुमाई करें। क्या ये सिस्टम उस तरह चल रहा है? ये जितने लोग जो पावर में आते हैं, चाहे वो CSS करके आ जाएं या चाहे वो पार्लियामेंट में आ जाएं या बाकी इदारों में आ जाएं, जो बुनियादी तौर पे जिस स्पिरिट के साथ वो आते हैं और सब्सिक्वेंटली उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंडेट होता है उसमें वो कितनी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, कितनी वो तैयार होते हैं उस पर खड़े होने के लिए। The fish rots from the head basically. These are selected people. और मैं कभी नहीं कहता कि सिपाही पुलिस का खराब है, मैं हमेशा लीडरशिप को ब्लेम करता हूँ। इसी तरह बाकी इदारों में भी अगर किसी को ब्लेम करना है या आप समझते हैं रिस्पॉन्सिबल हैं या कोई चीज़ ठीक कर सकता है, उसकी लीडरशिप है जिसने ठीक करना है। That is why he is there. He is to make decision, and he can only make decision if he is policies of equity and inclusiveness, and if he is talking to people, he is following those गुड गवर्नेंस पैरामीटर्स। नहीं कर रहे, वो कहते हैं मैंने कह दिया, मैंने कर दिया, मैं कह रहा हूं, अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये जो माइंडसेट है जिसको हम कॉलोनियल माइंडसेट कहते हैं, कॉलोनियल माइंडसेट ये है कि आप अपने लोगों को अपना नहीं समझते, आप समझते हैं कि अभी तक कॉलोनी चल रही है और ये जो लोग हैं कोई और हैं। गोरा साहब चले गए, ब्राउन साहब आ गए, जो जिसको स्टेक मिल गई है वो कहता है अब मैंने बताना है कि कैसे होना है, बजाय इससे कि मशवरा करे, वो बजाय इससे कि जो मॉडल टेस्टेड है दुनिया में उसको अप्लाई करे, अकाउंटेबल ठहराए। और मैं एक चीज जो हर जगह कह रहा होता हूँ, मैं जिस पे कंक्लूड करूंगा वासिफ साहब, कि इससे पहले आप मुझे कहें कि खाना ठंडा हो रहा है, मैं दो चीजें जो है बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ और मैं हर जगह जाके कह रहा होता हूँ। एक है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जो लोग कुछ आज करके जा रहे हैं 5 साल बाद उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए
चाहे वो वहां सीट पे हैं या नहीं है, कि वो किया और ये अंजाम क्यों आया, और उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। दूसरा मैं समझता हूं कि स्टेट हैज टू बी रूथलेसली एथिकल। स्टेट जो है एथिकल होगी। स्टेट ये नहीं कर सकती कि किसी के लिए कुछ कानून है, किसी के लिए कुछ और कानून है। स्टेट ये नहीं कर सकती कि उसने पिक एंड चूज करना है। स्टेट आर्टिफिशियल लीडरशिप नहीं प्रोड्यूस कर सकती। स्टेट हैज टू गिव एन एनवायरनमेंट एंड लेट द लीडरशिप कम आउट ऑफ इट. So state has to be ruthlessly ethical, and which is a challenge. And is it being ethical? That is another question. So I think it is a very interesting debate and deliberation. Thank you very much, Dr. Saab and Khurram Saab, Fahad Saab, Shahzad Saab. Thank you very much, and thank you for all the audience for sparing time and being here. And there were some good questions, and we can also have some more during lunchtime. And Wasil Saab, thank you for a very good moderation. Thank you very And much. the best part was he gave me the maximum time. Thank you very much. On behalf of Sustainable Development Policy Institute, I thank you all, the panelists, and thanks for all the attendees to for attending the session. The lunch has now been served outside. You may join us there, and we can have a bilateral discussion there also.